Hello everyone and welcome once again to your very own channel Easy and Effortless Economics. Last lecture में हम लोग ने बात की थी types of cost की. So in order to continue with the same, आज हम लोग discuss करेंगे short run cost curves and in the next lecture I'll cover up long run cost curves. उसके बाद we'll move to revenue analysis. Along with that फिर हम cover करेंगे types of markets. So all these videos are going to be of great help to you. So please stay connected and इन केस आपसे अगर कोई वीडियो मिस हो जाता है तो आप उसको प्रीवियस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, तो आपका सारा ये टॉपिक जो है मार्केट से लेके कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस एंड मार्केट्स ये सब कवर हो जाएगा. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. सो आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व. फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज शॉर्ट रन. व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स यहाँ दो सिनारियोज होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन. अगर हम बात करें अकाउंट्स की तो इन अकाउंट्स वी नो दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट few years, we are talking about months. But in economics, how we can identify that whether it's a short run or a long run? So we have just one simple rule to apply here. What does it say? That in short run we have a combination of both type of factors. What are the both types factors I'm talking about? फिक्स्ड एंड वेरिएबल. तो इसका मतलब है अगर फिक्स्ड और वेरिएबल वो दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो उसको कहा जाएगा शॉर्ट रन. और अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाएगा? लॉन्ग रन. सो लॉन्ग रन को अभी हम छोड़ते हैं. वी नीड टू फोकस ऑन शॉर्ट रन. सो वन थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, द शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड वेयर वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. So it says short run refers to the period during which at least one of the factor of production is fixed. Means at least one of the factor of production is fixed and the others are variable. Then comes three types of cost. Three types of cost that we are going to start with is your total cost, average cost, and marginal cost. We'll be seeing how these costs are defined and how these costs are interconnected. So first let's understand what is total cost. जैसे नाम से समझ में आ रहा है, total cost means total, it's a sum. सारी cost मिला के जो cost बनती है that is known as your total cost. So it says, what does it say? Let's have a look. Total cost refers to the aggregation. Aggregation means summation. Aggregation of all types of cost related to a cost object, which means fixed and variable. Means in this type of cost, this total cost means total cost, whether it's fixed or variable, all the costs are collectively considered or counted as your total cost. Next cost that we have to discuss is your average cost. Average means per unit. You should understand the meaning of the word, then you can easily understand the concepts. So average का क्या मतलब है? Per unit. So it says average cost refers to the per unit cost of production, which is calculated by dividing the total cost of production by total number of units produced. Means total cost क्या रही है उसको divide करते हैं total output से. Means total cost divided by output will lead to your average cost. Then third type of cost that we have is marginal cost. What does the word marginal mean? Marginal means that additional, extra. It says that with the addition of one extra unit, how much extra amount it is resulting in. Means for example, अगर एक एक इकाइयां या एक एक यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट कितनी कॉस्ट और इनकर करना पड़ रही है. तो इसीलिए ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ये कैलकुलेट होती है हमेशा टोटल कॉस्ट से. मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमेशा कैलकुलेट होती है टोटल कॉस्ट से. So it says marginal cost is the additional cost incurred in the production of one or more unit of a good or service. It is derived from the variable cost of production, given that fixed costs do not change as output changes. It is clear that fixed cost fixed रहती है तो इसीलिए ये consider करता है किस cost को? Variable cost. I have told you that it is derived from total cost, and in total cost we have two types of cost. वो कौन से दो types हैं? Fixed and variable. लेकिन जब हम बात करेंगे marginal cost की तो marginal cost will be considering only variable cost. क्यों? क्योंकि fixed cost is not at all affected by anything. तो ये तीन तरह की cost है. Total, with the help of total we derive average, means total cost divided by number of units produced, और फिर उसके बाद उसी से we will calculate marginal. Formula है marginal cost is equals to Tn minus 1. So this is your all the three costs. Now let's have a look at the relationship between all the three types of cost. When we talk about total cost, average cost and marginal cost, there is a relationship between these three types of cost.
एक चीज और कहना चाहेंगे कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट clearly, because if you are clear with this concept, when we'll be studying markets, it is going to be of great help to you, because you know how to derive or how to draw average cost and marginal cost, because you have to continuously draw all these types of curves. So what is important कि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. There is a logic behind everything. Okay, so let's discuss. We have understood the meanings. Now, क्या इन तीनों कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है? So let's have a look. सबसे पहले आप, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे दो कॉस्ट दिखाई दे रही हैं. एक है आपकी मार्जिनल कॉस्ट. दिस डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू पैनल्स. इसको दो भागों में बांटा गया है. नीचे वाले भाग में आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट है, और ऊपर क्या है? टोटल कॉस्ट. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है और वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन कॉस्ट. नाउ फर्स्ट, just have a look at the diagram. When TC starts moving, it starts rising at till point D. As you can see in the diagram, आपको diagram में नजर आ गया. Point D वो point है जहां पे E यानी जो marginal cost है वो अपने lowest level पे है. जब T से ये टोटल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो वो धीरे धीरे बढ़ा. इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. तो पहला पैनल बिफोर डी, डी से पहले आपको क्या नजर आ रहा है? टीसी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. उसके बाद वो क्या हुआ? इट स्टॉप्स एट डी. डी पे वो रुक गया क्योंकि वहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई? मार्जिनल कॉस्ट जो थी वो वहां पे लोवेस्ट हो गई. जब, अब इस तरह से समझिए, जब टीसी टोटल कॉस्ट बढ़ने लगी डिमिनिशिंग रेट पे, मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे घटने लगी. Total cost is increasing at a diminishing rate. Marginal cost starts falling at point D. Total cost remains fixed. It does not make a movement. And marginal cost क्या हुई? Marginal cost is at its lowest. वो अपने lowest level पे हुई. उसके बाद after point D, as you can see, the TC starts rising at an increasing rate and MC also starts rising. तो इसका मतलब है जब TC टोटल कॉस्ट बढ़ रहा था डिमिनिशिंग रेट पे तो मार्जिनल कॉस्ट घट रही थी. जब टीसी टोटल कॉस्ट कांस्टेंट हुआ तो मार्जिनल कॉस्ट वहां पे अपने लोएस्ट लेवल पे थी. और जब टोटल कॉस्ट बढ़ने लगा इंक्रीजिंग रेट पे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट भी इट आल्सो स्टार्टेड राइजिंग. तो ये रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं. जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करने लगी एट अ डिमिनिशिंग रेट तो मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टेड फॉलिंग और डिक्लाइनिंग. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, डी पॉइंट पे मार्जिनल टोटल कॉस्ट फिक्स्ड हो गई एंड ई वहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या थी? इज एट इट्स लोएस्ट. व्हेन टीसी स्टार्ट राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एमसी आल्सो स्टार्ट्स राइजिंग. सो ये है रिलेशनशिप टीसी और एमसी के बीच. अब दूसरी चीज जो आपको जानना जरूरी है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी. एसी एंड एमसी ये दोनों कर्व जो है ये यू शेप्ड कर्व कहे जाते हैं. और हमेशा याद रखिए कि एमसी जो कर्व है वो हमेशा एसी कर्व को एट इट्स लोएस्ट कट करता है. तो एज यू कैन सी पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पे MC cuts AC because this is the lowest point. So as you can see in the diagram, you have two curves. Black curve is showing your AC curve and MC, and blue curve is your MC curve. AC is your average cost and MC is your marginal cost. अब दोनों के बीच में relationship क्या है? Now just have a look at the diagram. I'll start here. You can see x axis पे output और y पे cost है. हमेशा याद रखिए, whenever you are drawing a diagram, just don't forget to label what you are showing on x or y axis. तो यहाँ पे देखिए, when AC starts falling, you can see AC curve ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है. So when AC starts falling, MC is below it. Okay, MC is below it. Then when AC starts rising, as you can see, point B आप देख रहे होंगे, उसके बाद से AC जो है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगा. When AC starts rising, MC is above it. दो कंडीशन हो गई. और तीसरी कंडीशन है MC means marginal cost cuts AC cost at its lowest. So on the basis of the entire derivation that we have seen, we can draw the relationship between AC and MC. First point, when AC is falling, MC is below it. When AC starts rising, MC is above it. MC cuts AC at its lowest and that point is point B. So this is the relationship between
AC, MC, and TC means average cost, marginal cost, and total cost. Or as I have told you, that total cost is the main cost from which average cost and marginal cost is derived. Now, let's have a look at the table so you have a better and clear understanding. Let's see क्या कह रहा है table. इस टेबल में आपको कई कॉलम दिख रहे होंगे. फर्स्ट जो है आपका वो आउटपुट का है, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. हाउ you have to calculate or how you are supposed to calculate quantity, total cost, marginal cost and average cost. For example, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो कि आपको क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. सो लेट्स हैव अ लुक दैट हाउ वी कैन डिराइव एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट योर average and marginal cost. Quantity 1 to 13 दी गई है. Total cost as you can see 10, 17, 22, 26, 31, 38, 48, 62. So as we have seen in the diagram, it starts moving. धीरे धीरे बढ़ना शुरू की, फिर ये बढ़ती चली गई, इसका लेवल जो है वो बढ़ता चला गया. Then on the basis of total cost हम कैसे marginal cost derive कर सकते हैं. हमने आपको फॉर्मूला बताया था at the very beginning that MCTN minus TN minus 1. So what we have to do, from every second value we have to subtract. For example, पहली वैल्यू जो होगी वो हम एज इट इज रहने देते हैं, यानी टोटल कॉस्ट 10 है तो मार्जिनल कॉस्ट भी 10 होगी. नाउ सेकंड वैल्यू विल बी 17 minus 10, 7. Third value 22 minus 17, 5. 26 minus 22, 4. 31 minus 26, 5. 38 minus 31, 7. 48 minus 38, 10. अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आया. पहली मार्जिनल कॉस्ट की जो वैल्यू होगी यू हैव टू कॉपी इट एज इट इज फॉर द टोटल कॉस्ट, और उसके बाद फ्रॉम एवरी नेक्स्ट यूनिट यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द प्रीवियस यूनिट. यानी सेकंड से 1 माइनस करेंगे, थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे, और इस तरीके से आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी. फिर क्वेश्चन आता है हाउ यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय dividing total cost by output. So you have to divide each of the total cost with the output. For example, 10 divided by 1, it will come to 10. 17 divided by 2, 8.5. 22 divided by 3, 7.3. 48 divided by 7, 6.9 accordingly. So what we are doing, total cost divided by quantity, we are getting average cost, and with every addition यानी हर बढ़ते यूनिट के साथ मार्जिनल कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है, तो वो इस तरीके से हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट. आई गेस दिस मच इज क्लियर टू यू टिल नाउ. अभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन है, यू हियर दैट पोर्शन अगेन, बट उसके बाद भी स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन जस्ट राइट इन टू मी, यू कैन जस्ट कमेंट देयर एंड लेट मी नो दैट which portion is not clear to you. Now coming to another part of the short run, all this what we are studying is under your short run cost curves. ये एक और confusion होता है that we don't understand that what falls under short run, what is under long run. So here we are talking about only short run. In the next lecture that I'll be taking up, उसमें हम discuss करेंगे long run. So that is why हमने अलग अलग दोनों को cover किया ताकि आप short run समझ जाइए और आपको long run की भी proper understanding हो जाए. अब here you can see total cost. Total cost is equals to total variable cost plus total fixed cost. अब ये क्या कह रहा है, आगे का total cost is denoted by TC, total variable cost is denoted by TVC, and total fixed cost is denoted by TFC. So now let's have a look at each one of them. और सबका एक डायग्राम है. What is the reason for the nature of this particular diagram, वो भी आपको बताएंगे. So total fixed cost है क्या, इसके कई सारे नाम हैं. एज यू कैन सी, टोटल फिक्स कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, दीज आर दी ऑल नेम्स दैट विच वी यूज टू डिफाइन टोटल फिक्स कॉस्ट. ये क्या कहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स इवन व्हेन आउटपुट इज चेंजिंग. Means this is the cost which is not at all affected by any change in output. It is not at all affected by any change in the production level. चाहे कुछ भी level रहे production का, बढ़े घटे, लेकिन ये cost same रहती है. Example, fixed rent on the land, fixed tariff on electricity, etc. आपने एक piece of land ली है, आप वहां पे factory run करते हैं, for any reason you have closed the factory for 5 days. तो इसका ये मतलब नहीं कि जब आप अपना रेंट पे करेंगे तो आप सिर्फ 25 days का देंगे. No, you have to pay for the entire month whether you have used it or not. So this is the reason, because it's fixed, it is not at all affected by anything. So this is the reason it is a horizontal line. As you can see here, that output is changing from 1 to 2 to 3 to 4 to 5, but
The fixed cost, total fixed cost is a horizontal line. It remains the same. It remains fixed at 20 level and it remains the same throughout. चाहे output 1 हो या output 5 हो. So this is the nature of your total fixed cost. है नेक्स्ट कॉस्ट जो आती है वो है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ये कौन सी कॉस्ट है? ये कॉस्ट होती है विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट. दिस इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट. What are the different names for this cost? This is also known as your variable cost, prime cost, direct cost, or special cost. This is the cost which varies with the level of output. It can be zero at zero levels of output. I'll give you example how. So this is the cost which is zero at zero level of output. For example, wages of temporary laborers, cost of raw material, electricity, etc. Why am I saying that it is zero? This concept you need to know that fixed cost is a horizontal line. अभी हम दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों कॉस्ट कर्व्स को, तो समझिए इस बात को. टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इट कैन बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैक्ट्री है आपकी, उसमें यू आर एम्प्लॉइंग लेबर्स टू वर्क एवरी डे. ओके, सो for 5 days there is no work in the factory. For any reason it is not in operating or operative sense. So what happened? For 5 days there is no work in the factory. So what does it mean? Are you going to call laborers and pay them without any work? No, you will only call them when there is a work. So this is the reason, that is why it is said that it can be zero at zero level of production. Means when there is no production, there is no work, there is no payment that has to be done. So that is why here you can see in the diagram that this variable cost curve, it starts from zero. It starts from zero and then it moves accordingly. Whatever the work they are doing, you are going to pay accordingly. So it varies, and the reason why it is at zero, why does it start from zero, this must be clear to you. That, for example, you are employing a labor to work only when it is required. If there is no work, you are not going to pay to them. Okay, so this is the reason it starts from zero. So we have seen both the curves, total fixed cost curve, that is horizontal line, or total variable curve. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल कॉस्ट कर्व. हम लोग का टोटल कॉस्ट कर्व होता कैसा है? Here you can have a look at the total cost curve. यहाँ पे as you can see in the diagram, x और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया है, y एक्सिस पे हमारा TC, TVC और TFC है. अब इसमें पहले आपको फिक्स कॉस्ट देख रहे होंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हमको पता है क्योंकि वो फिक्स रहती है, किसी चीज से अफेक्टेड नहीं होती है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है. फिर आपने देखा होगा वेरिएबल कॉस्ट, वो जीरो से स्टार्ट होती है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू द रीजन. तो यहाँ पे जीरो से टोटल वेरिएबल कॉस्ट गई है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से क्यों स्टार्ट हो रही है? द रीजन इज, अगर ये टोटल कॉस्ट इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट के कॉस्ट पॉइंट से नहीं स्टार्ट होगी, तो ये दोनों कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएगी. अगर ये जीरो पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा टोटल कॉस्ट कर्व, सो इट विल कवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट. इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू कवर फिक्स कॉस्ट. इट विल क्रॉस फिक्स कॉस्ट, बट इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू कवर. और टोटल कॉस्ट क्या कहती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन, और इट्स अ कॉस्ट दैट कवर्स बोथ द कॉस्ट, fixed and variable. So that is why it starts from the point of total fixed cost, so that it will cover both the cost. Both the cost means total fixed and total variable. So this is the concept of cost that you need to know. तो अगर ये वीडियो आपने ध्यान से सुना है, तो डेफिनेटली आपको ये चीज बहुत बेहतरी से और बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी कि ये कॉस्ट का ये नेचर क्यों है. And once you are clear with the concepts of these cost curves, I can assure you that markets are not at all going to be a difficulty for you. I'll make sure कि आपको सारे concepts बहुत सही ढंग से और बहुत clearly समझ में आए, तो ताकि आपको फ्यूचर में कोई confusion ना हो. So just go through this video again. If you have any doubt, let me know. And still, if you want me to repeat again or anything you want me to elaborate upon, just let me know. I'll cover that up. In the next lecture, in the next video that I'm going to upload, I'll be discussing about long run cost curves. These curves are only for short run. Next video में we'll be discussing long run short curves. Long run cost curves के बाद we'll be moving to revenue analysis. Then we are going to take up one by one all the markets from perfect, monopolistic, oligopoly, duopoly, monopoly. So we'll cover everything. So that's all for the day. I hope you all have a better and clear understanding of the concepts. In case of any query and doubt, just feel free to write it to me. So that's all from my side. Thank you everyone.
God bless you.